So good evening, all of you. Welcome to the session on position sizing and how to think about mid cap, small cap, large cap, and how to position yourself. Okay, when you take positions, how to think about diversification, and there are some learnings from my mistakes. So that also I'll share with you. But one thing I can assure you that after today's session, you will clearly not think in terms of small, mid, and large cap only, but you will also think in terms of growth. Okay, so very interesting actually data point. So let's start. Yeah, so I'm recording the session. So how to see large and okay. So anyone can tell me like what can be generally when we think of large cap, whether which cap can give multi-bagger returns, small cap, mid cap or large cap, which can give us maximum returns in 1 year, 2 year time frame if something has to grow. The small cap. Small cap. Okay. Any other answer? In 1 to 2 year, it can be a large cap. But if it is like more than 5 years, I think it is maybe a small cap. Okay. Now, if I have to little bit think in terms of risk, okay, where the risk is high in terms of risk is high in small cap, mid cap or large cap? Small cap. Small cap. Small Small. cap. Okay. So with the discussion, this is very clear that small cap generally risk is very high in small cap and reward is also high in small cap. Correct. Now let's take some examples. Okay. So first example I would take is okay. First example I'll take. TVS Motor. TVS Motor is a small cap or large cap company? Large cap. Large. So TVS, if I have to just see the market cap, TVS Motor share price, 1.15 lakh crore. That is a large cap, okay. And if I have to say components, Nifty 50. Okay. So index constituents, if I download, it is not there TVS. Maybe Nifty next 50 it will be there. 1 lakh crore. Okay, so pretty much large cap. Okay. Now, how much return this has given? 400 rupees stock in 2021 has gone all the way to top around 3000 or somewhere now. Also, if you take 2400, even if I take an all-time high breakout somewhere here, convert this into weekly, 800 rupees stock is not 2400, just a span of 1.5. They're doing really good actually. So almost 2x return, and from 400 it is almost 4x return. So this is actually a multi-bagger, correct? In just 1.5 years, correct? 1.5 year, 2 years, 4x return. Large cap stock. Okay. Then I'll take one more example, Asian Paints, which we discussed in the last session. Again, large cap. But what has happened is there is no return actually. From 2021, last 3 years, there is no return. Next is HCL.
Hindustan Aeronautics. Again, from 1000 to 4000, again 3x return. From top, almost 4x return in just 1.5 years. Very smooth, straight upward. Again, large cap, 3 lakh crore market cap. And now I will take NVIDIA. Anyone? What is the market cap of NVIDIA? NVIDIA market cap? 3 trillion. Okay. NVIDIA market cap is 3 trillion. You can see 3.48 lakh crore into, so 2 lakh 40 INR is 240 lakh crore. World's most valuable company. If I do 1 year, already from 50 it is now 141, 2x. 5 year, almost 7, 8x. So first thing what I would like to tell all of you is, or what I have noticed is, market cap at one point is irrelevant. Whether it is small cap, mid cap, large cap, the focus should be on finding the right stocks, right where there is a growth, where risk reward is in our favor, valuations are comfortable, right? And where growth is there. Because I'm talking here about a company which is the most valuable company. There is no company which has this market cap, NVIDIA. And that has become in just 1.5 years. That has become some 8 lakh crore, correct? So what I am telling all of you is, market cap is irrelevant basically. Most valuable company has become 7, 8x. So the notion that buying a small cap stock with highest risk and reward is not the right notion actually. It's the wrong notion. If you buy a wrong stock, because the moment you buy a small cap, risk is also there in the downside, right? So rather than focusing on market cap, we should focus on the business model, our circle of competence, and where growth can come actually. Okay, another example, which HAL already, when it was 75,000 crore market cap, I request all of you to keep yourself in mute, please. Please keep yourself in mute. So market cap actually becomes irrelevant. Okay, so always keep in mind there is a large cap which may give return. There is a cap, TVS Motor large cap again, 4x, Asian Paints no return, HAL 3 to 4x return, NVIDIA 8x, 2 years. World's most valuable company. So that cap is almost irrelevant. If you are finding a company based on moat, based on competitive advantage, that is what I have mentioned here. Moat, competitive advantage, and your circle of competence. Because if you don't understand, you don't know when to get out. Right? So that becomes very, very important. Okay. Second, one more very important learning, how I got to this concept from Rajesh, founder of AAA PMS, is, if there are stocks, for example, best example which I can think of is KFinTech or Safari Industries, where if you see KFinTech, which you have already bought, correct? I have does this weekly. Do you think there is a slowdown in KFinTech technology? It has fallen with the market. KFin market has corrected, correct? I do Nifty 50, say weekly chart. KFin technology again about to break all-time high. It will be weekly level. It will just break 1074 all-time high. But if I convert it daily, then again you have a different picture altogether. You just see that all-time high is 1180. But if you see weekly, it is about to break all-time high on a closing basis. Correct? And you can see the volumes. Sell side there is no volume. Accumulation is clearly there is volume. And almost stock is giving 60-70% return from buy level. Some 650 or 700 rupees we have entered, correct? 750 rupees. So always think if your circle of competence and whether there is a growth in the company or not. That sector you understand or a company you understand or not. And then that will give you more returns rather than focusing on small, mid, and large cap.
Okay. Now, if I have to take an example, okay. So I'll show one real portfolio. In that, we will take, sorry, that's what I'll take my own portfolio. My portfolio. Here, you see Safari. Safari Industries is there, correct? Now, Safari Industries is bought by Safari Industries. Somebody request on. Okay. Now, if you see Safari Industries, Rajesh Kothari ji has bought it around 400 rupees. Not even 4, actually some 200 rupees. Already it is 10 to 12x. 200 rupees he has bought. And still he is buying. So imagine the kind of, if someone who knows the business model, how someone can enter once it doubles, triples, or it becomes 4x. Still the person is buying. That means the kind of conviction, the kind of competence he has, or the understanding of the sector he has is so deep that still you are making money, correct? So if you know the sector, you know the stock, you can keep adding also. It is not like you have just once you have bought and you can't add up to that. Okay. So stock has already become 16x and still you can see the growth. Correct. If I show you the PPT just to give you an idea. I'm not promoting the PMS, I'm just disclaimer, I'm just showing you. So, Safari has become 18x from the entry level. Okay. So gives lot of confidence. Correct. So now let's not think in terms of market. Let's think in terms of what is my circle of competence, what industries I understand, and whether there is a growth in that industry or not. Okay. And then money will automatically, wealth will automatically. If you don't understand the stock, you don't understand the sector and you enter, then it is really risky. Okay. So I have summarized that also, that it should be based on our circle of competence, moats, whether there is a moat, competitive edge, and circle of competence about the industry and sector. And that is where we will create wealth. Okay. Anyone has any doubt in this? In terms of small, mid, and large cap? So we have taken practical example also, correct? KFin Technologies, which we bought. KFin we bought at, we bought around 653 rupees, correct? Current price was 1148. No, 1066. So somewhere around 65%. Correct. So why we bought K Fintech? That also we have mentioned so many, all these points I've added, because clearly it's a leader. Correct. So, right. So we have taken a clear example. Right. Anyone has doubt now in terms of small, middle, large cap? Because we have taken the most valuable company also seeing 8, 9x. Correct. But now is not a right time to buy Nvidia, right? Because when it was at 50, that's the time it was maybe a small cap. Who's this? This is Shambhu here. Shambhuji. That's a good question actually. Okay, so now actually I'm planning to buy on Monday or Tuesday. I'll buy Nvidia more. I have bought 6 months back. Again, I will add because from after latest quarter results, little bit it has corrected. Now, it's a good question that see whether it will grow or not. Uh, The growth let's is see. definitely there. I mean, Hmm, we know for sure that AI is going to continue to grow, hmm, and there will more and more use cases will come in, and a lot of people will continue to buy this API. So there is a growth for sure. But if you look at right now, it is 12x or 13x, right? hmm. But it may take more time now because that the initial rise, I think we missed it here, right? So if you're Very buying true. in 2023, just before this OpenAI,
So that is a Correct. right time for us to get into. But now it's more of a quarterly results. It's more of based on that, not this insane growth you would be getting. Very good. Very true. So now it's about like, what is your expectation? If you're looking for again 9x from here, answer is no. Okay, maybe no, because no one knows the right check. But yes, if you're looking for some, say FD returns are 6-7%, and I'm expecting some 15-20%, 25% kind of a return next 3 years, answer is yes. Yes, that I agree. Correct. Correct. No. So now here it is. It's all question of how you are structuring your portfolio. Correct. So if you are expecting some very high returns, then you have to sit, go back, and see that the current market condition what you want. You want to take that kind of risk, and if you get, yeah, of course, if you get such kind of stocks where you feel comfortable and you are expecting that kind of growth, yes, answer is yes. Correct. But if I'm expecting not multi-baggers, I'm expecting some 20-25% kind of a return. I'm planning to buy more Nvidia on Monday. Okay, little bit last after earnings, little bit it has corrected. So I'll start buying little more. I'll just add up to my old position little bit like that. Okay, that way now if you see Tesla also, now this is trading at 55 times, but Tesla is trading almost 96 times. Very very costly. So that way we should not buy Tesla actually. But again, 1/3 of Nvidia. But here there are so many business. Again, I may be wrong, correct? But because he has come into government and saying 20-30% growth next year, and so many business solar and coming to autonomous, and then mainly into mass transportation, correct? So opportunity is opening up. We never know what will happen here also, because Tesla is more volatile than compared to your Nvidia, correct? It's very very volatile stock. Again from 344 it went to all the way to 120 to almost half, and again back. Very very volatile stock, right, compared to Nvidia. But yeah, that is how you structure your whole portfolio Okay. based on growth and expectation. Okay. Any other query on this? Then we'll move to next slide. So HL also last when we discussed almost, as we come to 3x, and then now how to do diversity. That is very important. Okay. So say if you want to buy 5%, if you deploy 5% in each stock, then you can buy 20 stocks. If you allocate 7-8%, you can buy 12-15 stocks. Okay. Again, if you divide into different leaders, sectors, different time frame, you chances of outperforming is very high. So that book, there is one book which I have recommended last time also, Market Wizards by so he's a Jack D. Squire. Okay, so one of my favorite writers. He has written 3 books. Every person he has covered interviews of all those people who have made millions and billions of rupees. Okay, and out of that 70-80%, one book you will find some 10 to 12 people he has interviewed. 3 books, some 35-40 people are there. Out of them, around 30 to 33 people will tell only one line, that diversification is the only free lunch in the market. Okay. So when you, and it took time for me to understand that. Okay. And so if you diversify, what happens is I have made one Excel. Okay. So everyone can see this. Visible? Yes. So now when you see this, okay, here what happens is, what I've done is stock return, actual returns, and then in terms of portfolio return, impact on portfolio. So I have 100 rupees and divided into 5% each. Correct. So I can buy 20 stocks. Out of that, 8 stocks is in profit, 7 stocks is in loss. Same. They have given same return. Okay. So 8 stocks gave 20% return. 7 stocks give you
minus 20% return. And then balance only 5 because you are in search of multi-bagger. Okay. So one gives you 50, other gives you 100, 150, 203. So I've taken all, maybe I can just make it 250. That's not extrapolate. So in terms of portfolio impact, all these plus minus gives you 1% extra delta. But here you can see you have made 39% return on a yearly basis. Correct? This I've taken assuming 1 year we have got. If you say you have got this in 2 years, I can just divide it by 2. Still you have outperformed your FD by almost 3 times, correct? 7 3 are 21. 200% more return you have got compared to the FD. So if you understand this diversification approach, you don't overboard too much into single stock, which I did a mistake where I mentioned here about Zelpog, where I was very much attached to, I thought it will do very good. And at one level I got some returns and that I overboarded and almost 6-7% of the portfolio I got lost. So if you follow this approach, maybe if you have some more conviction, maybe it may be 7, 8, but don't put 25, 30, 35, 40% of that. If you don't understand, okay. Some cases, yes, you are inside following for many years, you are very confident, maybe 10, 12% sometimes. But if you go very much overboard and goes wrong, then what will happen is, say, if I just increase this to say 20% and I reduce other by 3, 3, 3, or say 2, 2, 2, 2, 2, 2, maybe here also 2 and 1, 2%. What has happened is, sorry, this is 5 minus, I'll say. See, your returns have actually what has happened is only 13% return because your 20% allocation to is down by 20%. Correct. Now imagine which I had 17, 18% is down by 50%. If it is down by 50%, only FD return show. So single stock can have that kind of impact in your portfolio. Right. So the whole effort, and imagine the kind of energy you have spent, correct? The kind of energy you would have spent in finding these 20 stocks. Right? So, and having 1% position will also not have so much material impact also, correct? So whenever you allocate and you are allocating overboarding and you don't keep that balance, then you're doing very good. Maybe this 5% become 50% return, but still you are making only 2% impact. Correct? And where you have overboarded and it is down by 50%, you lose your whole portfolio returns is different actually. This is so important to understand. Diversification is the only free lunch in stock market because you don't know how it will happen, where it will happen. So if you remember, if one PMS is there, Equitas, which is one of the top PMS, where minimum contribution is 10 CR. They're one of the top performing 33% CAGR. They divide 5 to 6% in each stock. They say we don't know what it is. The 16, 17 stock portfolio. Amazing. So if you listen to these fund managers, they actually follow this stock allocation. I think very, very carefully. So we should keep this in mind. So one PMS you should have at least 15, 20 stocks. If you have around 6, 7 stock, which I remember one PMS that had only 6, 7 stocks, we never recommended and they did very, very bad. Still, they are not able to recover from that shock. Because 3, 4 stocks going wrong, our whole portfolio is screwed up. So should be very, very careful. Correct. Correct, Harish. We'll get index return and no problem. If a company is right to invest, if you do not have understanding of that industry and information about it. No, Devendra, if we don't know about the company, then why you want to invest? Correct? Because then when markets will start or stock will start correcting, you don't know whether you should get out or not. See, if you have 5% kind of allocation,
even if 50% loss is only 2.5% impact in your portfolio, correct? So that way you are very, very taking a calculated bet, correct? But it goes in your direction, it makes a lot of difference, correct? So for example, say this becomes 200% up, giving you 10% return. That means 2.5% loss, four stocks you can cover. That means other four stocks, 5% allocation, they go down by 50%. Your single stock will be able to take care of those four stocks losses, correct? So that is how you manage basically risk. But if you overboard and that goes down, then it's very difficult for you to manage it. Like, anyone has doubt in this? Talk about diversification strategy. Neeraj, how many stocks should be there in one's portfolio? And ideal numbers do you have? Huh, that's right. Around 15 to 16 stocks. Okay. So 15 to 16 stocks means 6 to 7% in each stock. It's roughly somewhere like some stocks you may have 5%, some stocks you may have 7%, some stocks you may have 8%, depending on your conviction. So 15 to 16 stocks is a good diversity. Hmm. Our best way is you say, I don't know which stock will go up or down. I just put 5% each, 20 stocks. Simple. So someone who is doing more research will have more conviction, correct? So that way. So for me, it is like that. If I have very much high conviction, maybe a little bit more, less conviction or something like that. Or how I do is 2.5% initial position. That has also helped. Like Bajaj Steel, okay. Initial position was 2.5%. Now it has become 1 is to, they gave bonus of 3, 1 is to 3. So, but where we entered actually, Bajaj Steel. Up 71%. So initial entry was somewhere around 2014. Wait, all 3520, not 2014, you can divide it by 4, like somewhere around 500. Still you have 50%. So 2.5% when it goes becomes double, which will it become 5% of your portfolio. So here, because there is no con call, nothing, I tried to get some information, but I was not able to increase so much. 2.5 or 3.5% is there. So start with 2.5. Once you get more information, more conviction, that you start. Because for me, based on technicals, if it is there, I don't want to wait. I have to want to take some position. I don't want to miss. If it comes in chats, chat is because there's so much information you already boiled down into the price, correct? And then later you will see the information coming out. Now I came to know around 50 to 60% is exports. Correct. Now more information, 50 to 60% is export. So they are more into export, Bajaj Steel, rather than I was thinking it is more a domestic play. Now imagine US they becomes more strong. Their margins will improve because currency will depreciate. And then even if 84 becomes 89, almost 7-8% margin will improve, correct? For them. So they're doing very good actually. But Neeraj, like, won't this be sort of balanced by like if there is any tariff related tariff hikes? Means it will sort of have a balancing effect. This is So a reason. depends on what this one, but I think they are very good in engineering and very cost competitive actually. So their segment, I don't think they'll be able to produce at that pricing or like that. So basically they are really very deep into engineering and all. So whatever they have done, they they try to do it the best. So some things they are also leaders in few category actually. So that is how you get that confidence. So say even if there is a tariffs and it is like you told balanced out, so still they will do good, correct? Like, and we are not trying to add more to this position. Whatever is there, it is there. So please help us understand this one part. Like you said, like your initial position, means what you're saying is like say 2.5, right? But like
over time, if you bring in more new money into the market, into your portfolio, then like, uh, do you still try to keep that percentage or like you let it fall down? For example, in this case of Bajaj Steel, like, Hmm. I mean, it's assuming if you consider your consolidated portfolio having Nvidia, Tesla, etc., then like this percentage, it will start getting underrepresented, right, in the folio. तो 5-5%, तो अभी मान लो ये 600 आ जाता है, Mm-hmm. अपना एंट्री पॉइंट इज 500, ठीक है, अभी ये 600 या 650 आ जाता है, तो आई विल ऐड अनदर 1%, बजाज। टुमारो दे स्टार्ट कॉन कॉल्स, ठीक है, एंड वी गेट सम मोर आइडिया हाउ द ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग। टुमारो दे से वी विल एक्सपेक्टिंग 30% ग्रोथ, Mm-hmm. 30% growth. Now currently we see the valuation. One second, I'll open the screener only. $24 टाइम्स अभी ट्रेड कर रहे है ना, 1500 करोड़ का Mm-hmm. मार्केट कैप है, 3-4 अभी जो है सब लोग बिजनेस में आगे, नेक्स्ट जनरेशन। रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, प्रॉफिट मार्जिन इज 10%, 30% डेट इज, दिस वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, डेट इज ऑलमोस्ट वो है करके। तो एंड प्रमोटर शेयर होल्डिंग, इफ यू कम डाउन एंड यू सी प्रमोटर ऑल्सो इंक्रीज्ड टिल मार्च, है ना, so promoter is also showing the confidence. So now 30% growth, suppose there is a con call, I'm just taking one example. Tomorrow there is a con call, they say we'll grow at 30%. 2.5 years, they will double, correct? Sales. Right. They'll double sales 30%, 2.5 years it will double. Sales will double in 2.5 years. That means profitability will be more than the increase in sales, correct? Because then same comes down to margins, and then below that PAT margins. So we have always seen that more than growth in revenue, your PAT grows very fast, correct? Assuming say PAT is also same rate it is going, let's not extrapolate too much. तो 2.5 साल में जो चीज डबल हो रहा है, मतलब 24 के 12 टाइम्स में मिल रहा है, करेक्ट? Mm-hmm. At 767, at 600, maybe again it will be around somewhere around 16, 17 times. That means 2.5 years down the line you are getting at 8 times PE, करेक्ट? तो 2-2.5 साल में डबल हो रहा है, मतलब और क्या चाहिए? मतलब ईयरली अराउंड 25-30% का रिटर्न मिल रहा है, खत्म, और क्या चाहिए? एंड दैट Right. दे हैव, डेफिनेटली दे हैव मैनेज वेरी वेल, करेक्ट? जो मैं Yes. लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर अपन इसका बैलेंस शीट देखें, from borrowings you can see same level of debt they have maintained actually, Yes. correct? Or sales from 2013 has almost doubled from 283 to around 600, correct? But debt उतना ही है। रिजर्व्स कितने हो गए? 4-5x रिजर्व्स हो गए, करेक्ट? अर्निंग्स भी ₹2 का 30x हो गया 2000, करेक्ट? Mm-hmm. तो क्या हुआ है कि दे आर मूविंग टू अ प्रोडक्ट वेयर मार्जिन आर मोर, तभी तो ऐसा होगा ना, सेल्स डबल होना है लेकिन ईपीएस 30x हो गया, देखो मार्जिन भी बढ़ रहा है ना। Right. तो ऐसे अपने को सोचना है कि नाउ दे आर कमिंग इनटू इलेक्ट्रिकल पैनल्स, नाउ दे आर कमिंग टू एक्सपोर्ट्स। सो अगर ऑल थिंग्स रिमेनिंग सेम और रुपी डेप्रिशिएट होता है तो और इन लोगों को फायदा होता राइट, उनका है। एक्सपोर्ट तो बोल रहे हैं हाँ, 48% है अभी ब्रेकअप जो 50-60 एक्सपोर्ट, परसेंट है, हाँ वैसा मैं बोल रहा हूँ। डोमेस्टिक तो 52 एंड एक्सपोर्ट्स हाँ 48। हाँ हाँ वैसा। तो वो क्या होना, और तो मोर नॉलेज यू हैव, मोर यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू बाय एंड होल्ड, वैसा। अभी नॉलेज ही नहीं है तो अपन कैसे इसको पोजीशन सेलिंग करेंगे, करेक्ट? वैसा। हम्म। तो अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं बजाज से, इवन इफ इट कम्स 550, 600, 650, आई विल बाय लिटिल मोर, 1.5% आई ऐड, लाइक वैसा। अच्छा, मैं सो if this question is not outside this agenda of today, हम्म, is like जैसे so imagine for example you already know this stock that all right, if it comes at an attractive price, हम्म, and for example if you have at some point of time you'll say like अरे बाबा इतना ही पैसा है portfolio में, right? So हम्म। you have to sell something, so some kind of rebalancing has to be done, right? हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी अपन वही किया ना, जब अपन वी टू रिटेल लिया अपन, तो मैं क्या सोचा कि भाई वी टू रिटेल इस बोल रहा है कि इस मार्केट में भी, वो बोल रहा है कि आई विल ग्रो 25-30%, ठीक है? वो बोल रहा है कि मैं, मेरा ऑलरेडी 127 स्टोर है, आई विल ओपन अनदर 40-50 स्टोर, मतलब ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ ऑलरेडी यू हैव यूर ओपनिंग। और बोल रहा है कि मैं डेट नहीं लूंगा, ऑल दैट इज इंटरनल एक्रूअल। और आई हैव रेमंड लाइफस्टाइल इन माय पोर्टफोलियो, सेम कैटेगरी जो बी टू सी है, और उसी में रिटेलिंग में है, और वही
क्लोथ्स और उसमें, तो देन आई डोंट वांट टू कीप रेमंड लाइफस्टाइल, आई वांट टू एंटर इनटू V2 रिटेल। वैल्यूएशन वाइज बहुत इज कॉस्टली, बट 100 टाइम्स वो ट्रेड, V2 रिटेल अगर मैं देखता हूँ 100 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, करेक्ट है ना? रेमंड Right. में भी ट्रेडिंग 40-50 टाइम्स, चलो हाफ ऑफ दिस। बट यार यहाँ पे 50%, 40-50% स्टोर ओपन हो रहा है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। और मेरे पास ये अराउंड दिखा रहा है 24-25, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा डीमर्ज में, तो चलो 24-25 ही पकड़ता हूँ। दैट मीन्स रेमंड इज ट्रेडिंग 1/3 ऑफ V2 रिटेल, बट इज ग्रोथ देयर इन रेमंड लाइफस्टाइल और V2 रिटेल? दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क। एंड व्हाट इज द Hmm. मार्केट अपॉर्चुनिटी? V2 रिटेल का जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है और रेमंड लाइफस्टाइल का जो अपॉर्चुनिटी इज टोटली डिफरेंट, करेक्ट? सो Right. देन व्हाट आई डिड, आई एग्जिटेड रेमंड लाइफस्टाइल, आई एंटर्ड इनटू V2 रिटेल, वैसा। और रेमंड दैट रियल एस्टेट इंजीनियरिंग वी आर स्टिल होल्डिंग, करेक्ट? वो तो अपने लिए फ्री है पूरा, क्योंकि डबल हो गया था, करेक्ट? वैसा। Hmm. तो रेमंड तो अपन अभी भी होल्ड कर रहे हैं, उसमें उसमें अभी भी और डीमर्जर स्टोरी लेगा, उसमें भी क्या हुआ अभी लास्ट आप देखोगे तो, अभी जो उसमें भी जो डर रहा होगा कि भाई वो देखो वो 15% बढ़ गया, 16%, अब जो बेचा होगा वो अभी रो रहा होगा कि यार मैं क्यों बेच, करेक्ट? वैसे क्योंकि यहाँ पे तो अभी चालू है रियल एस्टेट, तो इन लोग का ऐसे ही पड़ा हुआ है, 100 एकड़ तो और पड़ा है, 60 एकड़ तो और पड़ा है खुद का ही, कॉस्टिंग ही नहीं है उसको, correct? Okay. ये चीज। और अभी फिर डीमर्ज होना है। Now Raymond will demerge into two. One is that auto component, another is that defense. This one, correct? तो रियल एस्टेट और दो कंपनी और बनने वाला भी है वैसा, तो लगेगा 1-1.5 ईयर, तो लेट लेट इट प्ले, देन वी विल सी व्हाट टू डू नेक्स्ट, वैसा। Okay. Thank you. If the dollar is strengthening, wouldn't it be a good idea to bet on Indian software companies that are directly, हाँ correct. So Pradeep ji, same, like if you know companies which will do good, that will just uh, icing on the cake, no cherry on the cake. Correct. So again, Yeah. on the software side, like one of the challenge that we where margins will get impacted is like if visas become a problem, right? Like even though Yes, yes, yes. so hiring has to happen in the US or Hmm. that will cost basically on-site hiring will cost more, right? So again, a Correct है, bit of margin pressure will be there from that perspective, right? करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ तो वही जो आप बोल रहे हो ना, बैलेंसिंग एक्ट जो बोल रहा हूँ, करेक्ट। सो देन अगेन मतलब you know, how much, which company, how they are trying to do, we can go back to Trump era, that time what has happened, which company has done good, what they have done, read the con call, or if you have some information where companies are getting huge projects, correct, 20-30% growth expect कर रहे हैं, तो make sense, correct? तो ultimately वही है कि like persistent system, one of my favorite stocks। अभी आप क्या बोलोगे? मार्केट गिर रहा है यहाँ पे, और IT वेरी गुड, तो लाइक दैट यू हैव टू पोजिशन एक्चुअली, मतलब पूरा IT में 100 कंपनी 200 कंपनी है, इसमें से अपने को एक या दो उठाना है, ऑल पुट टुगेदर वी नीड 15, मैक्सिमम इफ यू गेट 5-6 स्टॉक्स राइट, यू विल रिटायर, सिंपल, करेक्ट? और यू गेट गुड 2-3 गुड PMS, यू विल रिटायर, सिंपल, as सिंपल एज, कुछ नहीं करना। अभी आई एम इन अ मोड वेयर यू क्रिएट वेल्थ, डिवाइड इनटू 2-3 PMS, जस्ट लीव इट, नेक्स्ट 10 years रिटायर, खत्म, ऐसा। और बीच में इफ यू गेट योर ओन, यू आर डूइंग योर ओन, यू गेट सम सच काइंड ऑफ स्टॉक, यू इन्वेस्ट एक्स्ट्रा कैपिटल, वैसा। See, market is down, but see the pockets where you have opportunity to make money. Correct. Like Artemis, correct. अभी Artemis अपना ऑलमोस्ट डबल हो गया। अपन कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, कितनी बार सेशन हो चुका है पूरा इसके Artemis पे, ये इन डेप्थ सेशन हो चुका है। क्लियर क्लियर सी द वॉल्यूम्स, क्लियर बाय, चिल्ला चिल्ला के बाय बोल रहा था, और कैसे आया? चार्ट से आया ना, चार्ट सबसे पहले चार्ट में आ रहा है ना, कैसे मेरे को मिला, देन वी वेंट इनटू फंडामेंटल्स, करेक्ट।
So, Neeraj ji, chart में again you went basically ATH or something else. All time high, all time high. I So, want all time high. But then sometimes all-time high can, मतलब obviously it has to be followed by fundamentals. Otherwise, it can be misleading in a very bullish हाँ, market. फंडामेंटल तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जब तक अपने को फंडामेंटल नहीं मिल रहा है, तो वही है ना, बजाज स्टील आई एम नॉट गेटिंग कॉन कॉल, तो अपने में छोटा सा पोजीशन बस। करेक्ट। अगर मेरे को मिलता तो 5% ले लेते सीधा। करेक्ट है। जहां पे भी कॉन कॉल है, मोर इन्फा वी टू रिटेल 5% स्ट्रेट अवे। करेक्ट। इवन दो इट इज कॉस्टली, वी टू रिटेल में क्या हो रहा है? इफ आई सी वी टू रिटेल, ऑब्वियसली आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, मेरे को नहीं पता, ये भी है यहाँ से एनीथिंग कैन हैपन, बट 5% का अगर 50% भी गिरा तो आई लूज 2.5% ऑफ। करेक्ट। ऐसा पोजिशन साइजिंग, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। वैसा करेक्ट है ना। सी दिस स्टॉक कैन बिकम डाउन 50% ऑल्सो। कल अभी जैसे जो ट्रेंड करेक्ट हुआ है, अभी ट्रेंड जो करेक्ट हुआ है, करेक्ट, लोग इतने बुलिश थे, अभी 8,500 अराउंड 6,000 आ गया था। करेक्ट। तो तो अभी मान लो अगर एक क्वार्टर भी परफॉर्म नहीं किया ट्रेंड, है ना, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अभी एक क्वार्टर भी परफॉर्म नहीं किया तो मतलब गिर जाएगा ये। करेक्ट है कि नहीं? Correct. ठीक है। तो मतलब अब ये बड़ा स्टॉक भी आ सकते हैं नीचे। अपने जो अपने लार्ज कैप में जो अपने डिस्कशन हो रहा था, दीवान हाउसिंग क्या हुआ? तो गायब भी हो गया अभी तो। रिलायंस पावर अभी क्या हुआ? 380 का 35। दिस वॉज डायरेक्ट निफ्टी में जगह मिला था, अगर सबको याद। करेक्ट ये बहुत पैसा खराब है किया। ना। अब ना, ये तो लार्ज कैप है ना, तो लार्ज कैप में रिस्क कम है, दैट नोशन इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट। इन लार्ज कैप रिस्क इज लेस, दैट नोशन इज ऑल्सो रॉन्ग। रिलायंस, जीएमआर, मतलब यू नेम इट, इट हैज हैपेंड एक्चुअली सो मेनी टाइम्स। So always about moat and growth basically, and your valuation, what valuation you are entering basically. Correct. एशियन पेंट नो रिटर्न। करेक्ट। अभी ग्रोथ भी है, डबल भी हो गया, अर्निंग्स भी डबल, बट पी रेटिंग कम हो गया बिकॉज ग्रासिम इज कमिंग विद डबल द कैपेसिटी। 10,000 करोड़ का केपेक्स आ रहा है, 5,000 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक एशियन पेंट्स का है, वो भी अपन डिस्कस किए थे। करेक्ट। कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं अपन, उसी समय 1.5 साल पहले से बोल रहा हूँ कि भाई दूर रहो। एशियन पेंट्स का जो ग्रॉस ब्लॉक है, ग्रॉस ब्लॉक इज अभी 7,800 है। So 22 when we discuss it is 5,500. Now, Grasim told I will put 10,000 crore. Correct, double. तो वैसा है। आप देख सकते हो ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस CWIP देख रहा हूँ ना, कितना हैवी इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, 2-3 हजार। करेक्ट। अभी अभी ये भी एग्रेसिव हुआ है। करेक्ट। वैसा है। तो अर्निंग डबल हो गया है, बट प्राइस नहीं बढ़ रहा है। अर्निंग आप देख लो, लास्ट टाइम अपन डिस्कस किया, 30 का कुछ 60 हो गया, 30 रुपीज का अराउंड, 30 का 60 हो गया। अर्निंग्स डबल, प्राइस वहीं पे, प्राइस वहीं पे। बस। तो दैट इज हाउ, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री, थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस है, ये तो मतलब आपके सामने दिख रहा है, मतलब कंप्यूटर आ रहा है, 10,000 करोड़ बोल रहा है, तो फिर क्यों दिमाग लगाना है? बस। करेक्ट। अच्छा नीरज जी, एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट सेशन में कभी आप माइक्रो स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, वो बिटकॉइन और माइक्रो स्ट्रेटेजी दोनों का कैसे प्ले होगा। बिटकॉइन तो मैं कभी, मतलब बिटकॉइन तो मेरे को समझता, वो तो मतलब क्योंकि उससे तो कोई फाउंडेशन है ही नहीं, तो मैं दूर ही रहता हूँ बिटकॉइन। क्योंकि इतना अपॉर्चुनिटी, 6,000 स्टॉक है, तो मैं क्यों बिटकॉइन में देखूं? हाँ, अपने पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर ठीक है, और बिटकॉइन में लेंगे भी 2-3% लेंगे अपन, मान लो चलो भी 2.5% ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है, से इट बिकम्स 3x। ठीक है, अच्छी बात है। अगर मान लो गिर गया आधा, तो अपने को कुछ पता ही नहीं, तो क्या मतलब दिमाग में। बट सी द पॉइंट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है ना कि इफ, से फॉर एग्जांपल के फिनटेक, ठीक है ना, हियर आई बॉट एट 500, इफ आई होल्ड, सी द ब्यूटी इज, इफ आई होल्ड एंड दिस बिकम्स 2 or 3x, देन द ब्यूटी स्टार्ट्स कि एवरी 3 गुना हो गया,
से 300 रुपए का 1000 हो गया है। अब हर 20-25%, 30% में मेरे को 100% रिटर्न मिल रहा है ना, कंपाउंड हो रहा है। बिटकॉइन आफ्टर बिकमिंग 3x विल इट कीप कंपाउंडिंग? आंसर इज नो, क्लियर नो है। कि बिटकॉइन से 5 लाख करोड़ या 6 लाख करोड़ और हो भी गया तो दैट विल बी लाइक अ lucky situation. It's just we are betting on something we don't know, correct? But here is a business where there is a moat, there is a innovation. Innovation means launching of new products, uh, trying to do something different, going to outside the means world market, tapping world markets, correct? अभी कनाडा में लोग किए, फिर मलेशिया में किए, फिलीपींस में जा रहे हैं, Correct. फंड्स को लेके आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, करेक्ट? 25-30% का ग्रोथ दिखा रहे हैं, ठीक है? सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है तो और मतलब तो इसमें क्या हो ना कि what I'm talking now, I'm not talking only in terms of returns. What I'm talking is जैसे टाइम टेक्नोप्लास्ट है, ठीक है? अभी चलो 25-30% रिटर्न दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, 25-30% रिटर्न दे, लेकिन मेरे को मालूम है कि 26-27 में दैट हाइड्रोजन विल कम, तो वो जो कंपाउंडिंग होगा ना अगले 3-4 साल तक, 26 से 30 तक, वो जो मजा है कि यू नीड नॉट सिट एंड देन यू कीप फाइंडिंग न्यू स्टॉक्स। हाउ मेनी स्टॉक्स यू विल फाइंड? सो मेनी। You want to find a stock which has become 2 3x and then you just sit and then every 25-30% gives you 100% return. See, that should be the thought process actually. Not that यार 2-3 गुना हो गया फिर मैं निकल गया फिर मैं दूसरा खोज रहा हूँ, वैसे क्यों करना नहीं नीरज जी, समझा नहीं आपके क्या बोल रहे हो आप? एवरी 100% के बाद 20% इज 100% है? रिटर्न? Every 3x, after every 3x, see, my 100 rupees has become say 3x, 400 rupees, ओके, ठीक है? तो 300 रुपये हो गए, 300% रिटर्न आ गया, ठीक है? करेक्ट। नाउ नाउ into 25% is 100 rupees, 100% return on my cost, no? ओके, After 3x, correct? राइट राइट, So then हाँ, even if I am कंपाउंडिंग not विल किक इन, करेक्ट। compounding, yes, that's what. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप उसके बाद तो शांति से बैठना ना, चुपचाप बैठ, हरी करेक्ट, करने का क्या जरूरत? फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि हर 25% में 100% ठीक है, शांति से बैठो, क्या टेंशन? वैसा मैं बोल समझा समझा। अपने को ऐसा स्टॉक क्यों खोजना है कि मैं 1 साल तक विजिबिलिटी है और उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो, तो 1 साल में तो 1.5x हो गया, उसके बाद फिर बैठ रहे खोजे दूसरा स्टॉक, कि क्या करे भाई? और वो 1 साल में दैट पर्टिकुलर इवेंट में हैपन मे नॉट हैपन, जैसे अर्लियर आई यूज्ड टू डू मिस्टेक कि सम इवेंट विल हैपन 2 years and then market will go up. Abhi 2 years it may become very choppy. Slowly I deviated from that thought process. You know, now there should be some trigger, there should be growth now, and then there are some add-on, some additional catalyst which will help to grow the business in future like that, and that is really helping actually. Now, like you see K FinTech, you see Time Technoplast, slowly I have changed. Like for example, man industries, okay, now little bit growth, in fact उल्टा नीचे आ गया है ना, क्योंकि केपेक्स हो रहा है, मालूम है केपेक्स हो रहा है, बहुत सारा डिप्रिसिएशन आएगा, नहीं मिल रहा रिटर्न अभी। स्टार्टिंग में गया फ्रॉम 300, आई थिंक 300 समवेयर, और 300 500 तक गया, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या हुआ अभी थोड़ा सा करेक्ट, क्योंकि मालूम है कि केपेक्स होने वाला है, सब होने वाला है, डिप्रिसिएशन आएगा, नहीं दिखेगा रिटर्न। यूआईपी भी हो गया, हाइड्रोजन में दे आर द फर्स्ट टू गेट दैट अप्रूवल, एवरीथिंग इज देयर, बट क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा रिटर्न। So then slowly I have deviated ki now immediately what are the triggers? Even if you get little costly, no problem. But growth should be there now. Like that. That So, that makes more sense actually. Like so that. Neeraj ji, are you saying ki, मतलब even though the fundamentals are good, like right now we should not be accumulating man industries, rather we should be looking at like जो अभी grow कर रहा है, Go उस पे। कर हाँ वही ना, अभी जो ग्रो कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि अभी ये क्या प्लांट लेके आएगा, अभी क्या हो रहा है, अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, KDDI फॉरेन में प्लांट लेके आ रहा है, ठीक है? मार्च के बाद दे विल लॉन्च द प्रोडक्ट, ठीक है? इंडियन सब्सिडरी इज डूइंग वेरी गुड। अभी क्या होगा, जब वो प्लांट फुल फ्लेज जाएगा तो डेप्रिसिएशन में सब आएगा, यू विल नॉट सी रिटर्न, बट मे बी एक्सपेक्टेशन में प्राइस ऑलरेडी बढ़ जाए, नहीं बढ़ जाए, आई डोंट नो। अभी मैं इसमें अभी ये वापस 24 आएगा तो मैं थोड़ा सा ऐड कर लूंगा, लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे आई विल गो टू मच बिकॉज ये अपन कुछ 1800 में लिए हैं, 1800 का ऑलरेडी ऊपर जाके आया है, तो अब इसमें मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा अभी वैसा, तो अभी तो बहुत सारा चीज डेप्रिसिएशन ये सब चीज आएगा actually, है ना? तो इवन दो मार्केट वाज डूइंग वेरी गुड, बट यहाँ पे अपने को नहीं दिख रहा था वैसा मूवमेंट एक्चुअली वैसा। लेकिन यहाँ प्लस पॉइंट क्या है कि प्रमोटर भी बढ़ा रहा है अपना स्टेक वैसा।
है ना, बाय बैक और ये सब करके स्टेक बढ़ा रहे हैं इनडायरेक्टली. सो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि ओरिजिनल पोजीशन इज इंटैक्ट, है ना. 1850 में जो अपन लिए दैट पोजीशन इज इंटैक्ट. इफ आई वांट टू ऐड, अगर 2400 2200 आ गया तो थोड़ा सा और ले लो, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं. ऑलरेडी 5% है पोर्टफोलियो का. तो नीरज जी इस तरीके हम्म. से तो वही वो अगेन जो थंब रूल है मान लीजिए आप 15-16 स्टॉक्स रखना चाहते हैं portfolio, हम्म. वो तो वायलेट हो जाएगा. वो मतलब कि लाइक धीरे धीरे ये कुछ जेस्टेशन वाले स्टॉक्स पड़े रहेंगे कि क्योंकि हिस्टोरिकली ठीक है वो प्राइस पॉइंट ब्रीच नहीं कर रहा, जैसे इस केस में 1800 नहीं ब्रीच कर रहा है, लेकिन हम्म. आप पोजीशन भी बिल्ड नहीं कर रहे और आपका ओवरऑल परसेंटेज तो हाँ कम लेकिन, रहेगा, पोर्टफोलियो नहीं एक्सपैंड हो लेकिन, जाएगा. हाँ लेकिन अब वही है ना कि आप अपना जो एंट्री पॉइंट एकदम करेक्ट था ना इसमें. एंट्री पॉइंट करेक्ट था, तो अब मान लो 1 साल के बाद होगा जो भी होगा. तो 1 साल के बाद अगर ये डबल हो जाता है, मान लो यहाँ से 5,000 हो जाता है, या 2 साल के बाद 5,000 हो जाता है, तो 1800 की कॉस्टिंग में जो अपने को रिटर्न मिल रहा है वो अच्छा रिटर्न मिल रहा है. एंड देन इट विल कंपाउंड. तो अभी अपने को बस वेट करना है ऐसा. देन इट विल कंपाउंड, क्योंकि वहां पे सब डेप्रिसिएशन सबका इफेक्ट आ गया होगा. नहीं देन मैं दे आर समझ गोइंग रहा हूँ वो ग्लोबल, बात, करेक्ट. लेकिन फिर पोजीशन साइजिंग की जो बात कर रहे हैं वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग ने तो इस पे मतलब अगेन वही वो वेट पीरियड ज्यादा दिख रहा था तो इसीलिए ऐड नहीं किया. तो पोजीशन साइज विल गेट डाइल्यूटेड ओवर टाइम ना. नहीं होगा ना, 5% लिए ना अपन इसको. 5 का अभी ओरिजिनल 5% पोजिशन है अपने पास. नहीं 5% ऑफ दैट डे इज फोलियो साइज इज इट. हाँ तो वो तो बढ़ते रहेगा ना. तो अब क्या होगा कि अब जो फ्रेश कैपिटल आ रहा है, हम्म. ऑब्वियसली अपन उसको डिप्लॉय करेंगे कहीं पे. तो अब क्या होगा कि अब मान लो जैसे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो से 10 लाख से 5 का 10 हो गया, तो नॉट 10 का हम्म. 5% इज 50,000. सो फ्रेश यू डिप्लॉय 50,000 वैसा. वो तो अब वो तो कॉन्स्ट्रक्ट के ऊपर है ना कि फ्रेश मनी हाउ मच आपके पास सरप्लस अवेलेबल है, करेक्ट. राइट. उसके हिसाब से अपन प्लान कर सकते हैं, करेक्ट. तो अब दैट अच्छा इज तो आप इंडिविजुअल चॉइस एक्चुअली, करेक्ट. ओके. नहीं तो क्या होगा कि से फॉर एग्जांपल नाउ के फिनटेक सपोज दिस बिकम्स 3x फॉर एग्जांपल, तो ये तो 15% ऑफ द पोर्टफोलियो होगी, करेक्ट. तो मेरा से ये 1 CR का सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, 1 CR हैज बिकम से 2 CR फॉर एग्जांपल, ऑल पुट टुगेदर. नाउ ओके अंडरस्टूड गॉट टू इट. सी आर हाँ 2 CR का 5% क्या होगा. अब 1 CR का फाइव 10 फाइव लैक्स, अब 2 CR का 10 लाख हो गया ना. तो अब 10 लाख फ्रेश, या तो मैं बोलूंगा कि आई विल स्टिल कंटिन्यू विद 5 लाख, ठीक है. तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो इम्पैक्ट आएगा, जो 10% आना चाहिए वो 5% आएगा, ठीक है. बट इफ आई हैव मोर सरप्लस, से इन अ ईयर आई एम सेविंग अराउंड 25-30 लाख, सो इन अ ईयर आई एम गेटिंग 5-6 स्टॉक्स, आई कैन एट 10-10 लाख, करेक्ट. वैसा मतलब फाइव करेक्ट. 6-7 लैक्स करके मैं ऐड कर सकता हूँ ना थोड़ा अच्छा. तो आई डोंट गो 5%, आई डोंट गो 10%, आई विल एट 7.5, और आई एट 7%, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ना लोग वैसा. नहीं मतलब करेक्ट है. या वैसा आई एट दैट पॉइंट कि वो तो इवॉल्व होगा ना, मतलब आपका पोर्टफोलियो हाँ स्लोली, करेक्ट. वैसा है. यस फ्रेश कैपिटल के साथ में इफ द स्टॉक इज ग्रोइंग तो वो हम्म. परसेंटेज मेंटेन रहेगा या आसपास ही करेक्ट रहेगा. है. और हाँ but जैसे वो नहीं रहा एग्जांपल दे तो रहे हैं. फिर हाँ. आपको करेक्ट, डायलेट नहीं रहा तो आप लिक्विडेट कर सकते हो करेक्ट, राइट. करेक्ट, करेक्ट. अब जैसे रेमंड है, ठीक है. अब रेमंड दिख रहा है कि भाई लाइफ स्टाइल में नहीं लग रहा होता, लेकिन V2 में लग रहा है, तो पूरा ही अपन निकाल दिया ना रेमंड, कुछ नहीं रहा. करेक्ट. रेल टेल याद होगा कि बहुत ही एग्जिस्ट 50% अपन बेचे रेल टेल, रिमेंबर राइट. 550-600 रुपीज में बेचे अपन रेल टेल, करेक्ट. 50%. अभी उसका बेनिफिट मिला, वो पैसा अपन दूसरी जगह लगा दिया, करेक्ट. ये तो ऑलरेडी अपना डबल से भी ज्यादा हो गया, करेक्ट. वैसा. तो जब लग रहा है कि वैल्यूशन एकदम ही स्ट्रेस्ड आउट हो गया, 15-20% मैनेजमेंट ही बोल रहा है, और इतना अभी भी देखो, अभी रेल टेल क्यों बेच दिया अपन. टेक देयर ओनली रेल टेल. ये देखो फ्रेंड्स, बुकिंग सम प्रॉफिट इन रेल टेल, डाइवर्सिटी इन टाइम टेक्निकल प्लस केफिन और केडीएल बेस्ड ऑन लेवल. देखो ये फायदा मिला कि नहीं अपने. आज अपन उसमें डाइवर्सिफाई की के फिनटेक, और उसमें तो अपने को बेनिफिट मिल गया ना. वैसे मैं 5th अगस्त, ये 5th अगस्त, ये समवेयर है. हाँ 460 के आसपास, तो बच गया ना बहुत पैसा. वैसे
थोड़ा थोड़ा पियो, सारा नहीं पियो। Correct. So, Neeraj ji, like if you look at the last 1.5 months, ना तब तो ऐसे ही लगता है कि majority of the portfolio stocks are in this direction only, right? तो वो नहीं तो तो अपन क्यों निकले ना रेलटेल से, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड आउट लग रहा है बहुत जल्दी। जो अपन 2 साल के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 6 महीने 8 महीने में आ गए ना स्टॉक में। और ग्रोथ उतनी है ना कि देखो उस कॉन कॉल में आके अभी भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैं 15-20% ग्रो करूँ। यार 15-20% ग्रो कर रहे हो लेकिन रिटर्न 30-40% ग्रोथ का दिखा रहा है आपका स्टॉक में। तो फिर मैं क्यों बेचो, थोड़ा सा चेंज करो, वैसे मैं बोल रहा हूँ। तो इट विल इवॉल्व, मतलब क्या होगा ना, पोर्टफोलियो विल इवॉल्व स्लोली। आपको ऐसे सब फील होगा कि हाँ भाई अभी ये यहाँ पे ये रिटर्न आ गया, इसको बेचो थोड़ा सा, दूसरे में डाइवर्स्ट, वैसा। अभी अब अगर मैं देखता हूँ, अभी मैं रेलटेल और इसको सिंपल देखो, अभी लेट्स कंपेयर रेलटेल एंड दिस। रेलटेल 50 टाइम्स ट्रेडिंग, रेलटेल जो ट्रेड कर रहा है 41 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, उस समय इट वाज 75 टाइम्स जब हम बुक की, ठीक है। एंड के फिनटेक आपको 61 ज्यादा में ट्रेड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल, बट स्टिल यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है। स्टिल आई एम होल्डिंग आराम से, आई एम कंफर्टेबल इवन द वैल्यूएशन इज मोर, करेक्ट, पी मल्टीपल इज मोर, करेक्ट। तो एक तो 20% अपने को बच गया डाउन साइड में, 20-30%, तो 30% डाउन हो गया अपने सेल से। प्लस ये के फिनटेक बढ़ गया उसी टाइम फ्रेम में 25-30%, तो 50% का तो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल गया ना अपने उसी टाइम फ्रेम में, करेक्ट। yes. ये मैं बोल रहा हेलो हूँ। हेलो, नीरज, जो क्वेश्चन है अपना केएनआर कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा देखना था अपने को। वो बाद में देखेंगे, पहले मैं कंप्लीट कर लेता अच्छा हूँ ठीक, स्टॉक ओके स्पेसिफिक है ना। ओके ठीक ओके। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट, सो जेलमॉक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड है ना, 15 to 17% ऑफ माय पोर्टफोलियो स्टॉक है, 60 to 70 लॉस हो गया, 10% का पोर्टफोलियो। अब सोचो, द मेंटल पेन टाइम फ्रेम विल कंफ्यूज ब्लॉक योर कैपिटल। अभी क्या हो रहा है जेलमॉक, माय ओन मिस्टेक आई एम टेलिंग। अभी क्या हो रहा है, स्टिल सेम प्राइस 128, आई डोंट नो व्हेन इट विल कम बैक। एंड द नेचर ऑफ माइंड इज इट एक्स्ट्रापोलेट्स, है ना। अगर आप देखोगे कोई भी बात को होता है ना, अपने को देखते दिखता है, अगर कोई कंपनी का स्टॉक ग्रो हो रहा है ना, अपने को लग रहा है कि कंपनी का स्टॉक ग्रो होने वाला है, तो अपन क्या करते हैं, उसको अपन ज्यादा ले लेते हैं, करेक्ट है कि नहीं? तो अपने को लगता है यार ये अच्छा करेगा, 3 गुना 4 गुना नहीं, बहुत ज्यादा हो जाए वैसा। इफ आई एम एक्सपेक्टिंग रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कीप इन म्यूट वॉइसेस। सो 100 रुपीज का अगर अपने को लग रहा है कि 300 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो अपन 200 एक्सपेक्ट नहीं करता। और 200 जब हो जाता है तो अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 300 400 500 रुपीज हो जाए, करेक्ट है? तो हमेशा क्या होता है कि द नेचर ऑफ माइंड इज इट ऑलवेज एक्स्ट्रापोलेट, वैसा वो अपने को हमेशा ध्यान रखना, द नेचर ऑफ माइंड इज एक्स्ट्रापोलेट। और जब मार्केट गिरता है 100 का 50 हो गया, तो अपने को लगता है कि भाई ये 10 रुपये 20, मतलब इट विल कम डाउन, इट मे बिकम ओनली 10%, और लॉस में बी मोर, देन इट आवर माइंड इज नॉट रैशनल। Okay, in life also we see like small things, we try to extrapolate in mind, correct? Because the nature of mind, it extrapolate things far beyond in the future actually. So very important that we create that balance, correct? ऐसा। अभी तक मार्केट अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा था, तो अभी सबको लग रहा था कि अभी नाउ इफ यू सी निफ्टी, अभी लग रहा था कि 30-40 थाउजेंड चले जाएगा, अभी गिर रहा है तो अभी सबको डाउट हो रहा है कि भाई अभी 2-3 साल तक लग रहा है कुछ नहीं होगा, बट ग्रोथ विल कम, इंडिया विल डू गुड, maybe another 3-4 months it may be like that, but yes, again it will slowly go up. So it is like that. जब ऊपर जा रहा था तो then everyone was expecting this 4th June also everyone thought nothing will happen, but अगले 2-3 दिन में सब नॉर्मल हो गया, again immediately within 3 days from bearish everyone became bullish, 3 days में। So sometimes it will grind you, that is the शायद कल ही nature कुछ of, हो जाएगा। हाँ कल ही कुछ हो जाएगा। अब अभी इतना अचानक से बढ़ गया, अब सब लोग फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई अभी हमारी रिकवरी आ जाएगा, अभी डाल दो पैसा। तो क्यों ऐसे करना ना, डिवाइड कर दो ना, 30-40-60% अभी डालो,
बैलेंस 40% 3-4 महीने में डिवाइड कर दो, खत्म, क्यों दिमाग लगाना, राइट साइड नो वन नोज व्हाट विल हैपन, but there will always be pockets where something is going down, something is going up. Whether we are rightly positioned or as an overall portfolio, is that is what you have to see, like that, correct? Now KDDL, you know that plant is coming, so you don't expect too much, but you just, your costing is right. You know they are going global. There will be time, there will be good time, and with that, and management is very good. They're already working with so many good industry leaders and all. So just give them some time. Don't be in a hurry. Don't expect why Nifty is going up, why KDDL is not going up. Correct. So like that. So that thought process should be there. Like that. Okay. So that's it. So I have covered all three. Okay. So I have covered how to see large. So now it is very clear. Anyone has doubt कि लार्ज कैप मल्टीबैगर नहीं हो सकता, मिड कैप मल्टीबैगर नहीं हो सकता, स्मॉल कैप मल्टीबैगर नहीं हो सकता, कोई भी मल्टीबैगर हो सकता है। बस इतना अपने को ध्यान रखना, अगर आप स्मॉल कैप में हो तो ऊपर तो जा सकता है भाई, नीचे भी आ सकता है। एंड सेम थिंग हैपन विथ लार्ज एंड मिड कैप, chances are little less compared to small cap, but it can happen in large and mid cap also, that it may crash on the downside. ठीक है, ऐसा नहीं है कि large cap and mid cap are prone to market risk. There is no risk in large and mid cap कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा. It can happen if you are in a wrong stock. अगर कुछ नहीं होगा तो like Asian Paints, if you have entered there may be no return also. Then is again you are not getting, you are deploying your capital in the right way, correct? Because you come to stock market because you are taking a risk. So for that you need that extra returns, correct, compared to your FDs and all, like that. So always think like that. Like, and maybe one session I can take on like what is the thought process of different fund manager like Mr. Rajesh Kothari and that Siddharth Bhaiya of Equitas. They're very, very unique thought. So if you just study those fund managers, no, and how they construct their portfolio will itself give you a different touch of how you can, different point of time, how you can manage your, or you can structure your portfolio basically. Like, so maybe one session we can have on that also. If everyone is interested, we'll do one session on that. ठीक है. So diversification, all three I have covered. Anyone has any doubt? And then we'll close for the day. अब है कौन सा स्टॉक बोला था? हेलो, आई थिंक वो केएनआर बोल रहे थे, केएनआर केएनआर कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में तो नहीं, कंस्ट्रक्शन से तो ऐसे भी दूर ही रहता हूँ, तो इसके बारे में तो नहीं पता केएनआर, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के मैं बता दूँ कुछ, क्या मतलब कुछ अगर नीरज इंटरेस्टिंग. जी, हाँ, ये टाइटन एनटीपीसी इनको किसी को ट्रैक करते हो क्या आप? अब टाइटन तो मैं आपको अपन तो डिस्कस भी कर चुके हैं कि मतलब ये तो वही है कि मतलब वो इतना लार्ज कैप हो गया कि जा सकता है, बट वही है कि अभी अब तो कंपटीशन बहुत आ गया ना, तो अब जो स्टैंडर्ड आ गया, अभी सारी कंपनीज अच्छी कर रही है, सब लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, सब लोग फोकस कर रहे हैं कि भाई ऑफलाइन 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 सब जगह आना है, करेक्ट, अपना स्टोर लेके आना है. इनफैक्ट रीजनल प्लेयर्स आर नॉट कमिंग एट द नेशनल लेवल, तो राइट. कंपटीशन है बहुत ज्यादा. तो अब क्या हो गया कि एंड दे आर एबल टू क्रिएट गुडविल, वाई बिकॉज दे आर नाउ एवरीवन इज ब्रिंगिंग ब्रांड एम्बेसडर, करेक्ट. अभी मैं उस दिन देखा उसका क्या है अपना के से नाम है ना, क्या नाम है उसका? कृष्णा नहीं, कार्तिक आर्यन, नहीं नहीं नहीं, ये अपना ज्वेलर है ना एक और, जो कल्याण 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 ज्वेलर्स। कल्याण कल्याण और कल्याण कल्याण. किन गाडगिल. हाँ, कल्याण ज्वेलर्स, इफ यू सी दे आर ब्रिंगिंग ब्रांड, बट किसको, सबको लिया है, अमिताभ बच्चन और कौन कौन सबको तो लिया है. तो नहीं, और आप सही बोल रहे, रीजनल में जैसे हाँ, कल्याण हो गया, मलाबार हो गया, ये सब मतलब हाँ, नेशनल दे आर, एम्बिशन हो गए इनके. yes, they all are. And yesterday I was listening to one fund, and they are investing into it's like a pre-IPO PMS. They are investing into that Calcutta-based they are also coming to national. So all these regional players now they have understood the game and they are coming. So pan India आ रहा है तो competition तो आएगा पक्की. वजह. तो मतलब ये, एंड चूंकि ऑलरेडी स्टैंडर्डाइजेशन वाला गेम हो चुका है, तो हम्म. नाउ द रिटर्न्स निकलना विल चाहिए ना. मच मोर म्यूटेड है. अब हाँ हाँ, पैसा yes कहीं yes और ढूंढ सकते हैं. yes yes definitely. एंड दूसरा, आप एनटीपीसी एनर्जी साइड में NTPC तो
एनटीपीसी मेरे को पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये थोड़ा सा एनर्जी साइड मेरे को उतना आइडिया नहीं है। ये मेरे कजन ही इज इनटू वन दिस साइड ओनली, इज a CFO in one company. I'll speak to him. He's a director in CFO in that particular power company. I'll speak to him. All right. And Neeraj, again, any understanding on this Adani fiasco once again? अदानी में तो वही है ना कि वही तो माहौल है ना, इसमें भी वो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हमेशा रहा है, कभी भी कुछ भी होता है। तो एक ही जो इसमें जो अदानी पोर्ट्स है, जो ये एक अदानी पोर्ट्स है ना, अदानी पावर, इसको छोड़ के तो मेरे को कोई भी वैल्यूएशन वाइज उतना कभी भी नहीं लगा। अदानी पावर अगेन समवेयर अराउंड 150 इज अ गुड बाय, 150 200 इज अ गुड बाय अदानी पावर। And talking about power, like what about Hitachi or Power India? क्योंकि Like, जहाँ पे, क्योंकि ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू जहाँ पे भी है ना, कल को क्या होगा कि अगर मान लो, अभी तो सब ये सब लग रहा है, लेकिन जिस दिन ये लगा कि दे हैव प्लेड विथ नंबर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन नो वन विल ट्रस्ट एक्चुअली। उसके बाद फिर क्या होगा, एग्जिट भी नहीं मिलेगा। समझ गए? फिर और वो बंद कर फिर देगा। हाँ, फिर वो बहुत टाइम लग जाएगा फिर। अगर आप उसको देखोगे HFCL, ये सालों साल लगे, दिख रहा है ना आप, 2002 देखो कितने साल हो गए, उसके बाद अभी ब्रेकआउट दिया, 20 साल हो गए, 25 साल। तो बहुत ही मुश्किल है। वो कितने साल पैसा फंसे रहेगा अपन बोले। इसलिए आई थिंक 95-98% PMS डोंट इन्वेस्ट इन टू अदानी स्टॉक, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कुछ भी हो सकता नीरज जी, पेटेंट का अगले बार करोगे क्या सेशन उसके ऊपर? है। हाँ, पेटेंट अगली बार कर लूंगा, तो अभी तो ऑलरेडी ठीक है, 7 हो गया। ठीक है, पेटेंट ठीक। अगली बार कर लूंगा, और प्लस एक और कर लूंगा, क्योंकि देयर आर सम 4-5 स्लाइड्स, आई कैन ऐड वन मोर इन दैट नेक्स्ट, ऐसा। तो श्योर। दो साथ में कर लेंगे नेक्स्ट। ओके। Neeraj, just one quick question. If you look हाँ at Airtel, Railtel, what you shown there, and the other like RVNL and all, right? These are the operating profit margins are like 5% and 6% and 10%, या right? These are या pretty low, but you see यस the order value is very high. यस And यस यस, वेरी ट्रू, गुड क्वेश्चन। at the same time, when you look at some small companies like Lemon Tree and all that, the operating profit margin is almost like 46% to 50%. So how do you look at investing in these two? Maybe we can you can talk in the next meeting. No, But no, just in short, I'll just give you some direction. See, lemon tree and hotel is asset heavy, correct? So I'm not now just what? specific to that. I just meant, how do you look at? I'll tell you. So they are asset heavy. So now what hotels are doing is they are doing tie-ups actually. They will take an existing hotel, they will just manage. So if you read about Hilton, okay, so that is the model they have changed slowly. Earlier they used to buy their own hotels, the whole building, and then they slowly understood that this is not the right way, and then they started doing tie-ups with local and give their brand name, take the management over, and then have some arrangement. And now all these companies all around the world and in India, now that is the model they are following. Okay, because earlier it was very asset heavy, so their depreciation and all that, as you come down, operating margins will be high, but as you come down, expenses will increase. Coming to Railtel, if you see, order book is very high because they keep getting order. But if you see the execution, when you listen to the con call, they're telling 15-20% growth. We cannot execute more than that. So then why order may be, like for example, HAL, their order book is full till 2032. They themselves are saying that till 2032 existing order itself is enough. Now whatever is coming will go beyond 2000. So then you have to come somewhere in balance. Okay, what will be the growth and what is the price? Like that. So every stock and every sector is totally different to, means the way you will calculate will be totally different. Like, so somewhere you will take a P multiple, somewhere you take a revenue multiple, somewhere you take B2C, B2B, correct? All those things depends on each and every sector and then particular stock, what is happening, correct? Okay, So thanks. two companies in same sector will have a totally different story. That is for sure. Yeah. Correct. Like that. So we have to take a call like that. Okay.
Okay, good question. It was a good question. So order book, yeah, that is how it plays. So how much they're able to execute. Now, Nvidia, if you see the latest con call, the order book is means they are telling whatever demand is there, demand will outstrip their supply in 2025. So basically, what market is telling is you will not be able to supply what is the demand. Correct. So a little bit it has corrected. Maybe it may correct little bit more, but in the long run, it will do good. Like Okay. That may also increase the operating profit margin or net profit margin over a period of time because of the high um, order book and the moat in the business. for which company? For anything, RVNL and all of these. The RVNL is the volume game. RVNL is the large Yes. product. Even Yeah. in small margin also, they will do good actually. Correct. So now they are going international, no? International orders and all like that. So that's why they are doing good actually. RVNL. You can see the sell volume is almost dried up. Mm. So again, somewhere around 300 will be a maybe good entry point. Like. Okay. 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 So any other questions? We'll close. Okay. So Niraj, I think yeah, there is one on the chat huh, huh, about Reliance, and Reliance. Yeah. it's if you can just quickly have a look. Okay. So Reliance Industries. See Reliance. Actually, Reliance is the I have largest a market. I have a very silly thought or a question to ask. मतलब Reliance में because of the splitting, Hmm. now is it possible that like people are booking notional losses and squaring of their long-term gains or whatever? नहीं नहीं तो मेरे को क्या बात लग रहा है ना कि चलेगा कि क्योंकि अभी बोनस के शेयर्स को फ्री हो जाएगा और पुराना नहीं उसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखो बोनस अगर वैसी होता तो उसकी बजाज थी तो यहाँ पे तो 1:3 हो गया ना अगर मैं बजाज स्टील देखो यहाँ पे तो 1:2 यहाँ तो और ज्यादा गिरना चाहिए करेक्ट बट रिलायंस में मेरे को क्या लग रहा है ना यू सी लॉन्ग टर्म बेट्स लाइक सेम जो एशियन पेंट्स हो रहा है व्हाट आई सी इज अभी दो चीजें वन इज द रिटेल इज नॉट डूइंग वेरी गुड ओके एंड सेकंड जो अभी स्टारलिंक का जो चल रहा था अभी नो आई थिंक गवर्नमेंट हैज गिवन अ गो अहेड दैट जो टेस्ला का जो स्पेसएक्स का जो स्टारलिंक है ना दे कैन प्रोवाइड राइट इंटरनेट इन इंडिया तो राइट पीपल आर टेकिंग द लार्ज फंड मैनेजर दे आर टेकिंग लॉन्ग टर्म बेट्स वैसा है तो ये क्योंकि इतना ज्यादा मूवमेंट ओनली व्हेन यू हैव अ लॉन्ग टर्म बेट अदरवाइज आई डोंट थिंक अब ये मे बी नेक्स्ट ट्रिगर इज हाइड्रोजन बिफोर दैट आई डोंट सी एनी अदर actually today only I was comparing with nvidia nvidia is almost more than 10 times I did on excel this year to 240 lakh crore is nvidia and Reliance is some 17 lakh crore almost 14 times of Reliance actually which is the biggest market cap company in India. Correct. So वैसा है बट यस ये मेरे को नहीं लगता कि रिलायंस पे बहुत ज्यादा स्टोरी and even oil demand भी possibly subdued रहेगा इसलिए भी होगा नहीं और वो तो क्या है ना इन लोग का तो दे विल कम सो मेनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है ना तो भाई यहाँ वहाँ दे विल डू गुड देयर बिकॉज अभी तो तीन में भी स्प्लिट होना ना अभी तो रिटेल जियो एंड दिस वन रिटेल जियो हाइड्रोजन एंड टेलीकॉम एंड दिस ऑयल टू केमिकल ओटीसी तो तीन में और डीमर्ज होना है करेक्ट अभी तो वैल्यू अनलॉकिंग और बाकी बट द वे सी नाउ एक्चुअली अभी क्या होना था ना सी आई हैव टू सी प्रैक्टिकली थ्रू टेक्निकल थ्रू आई अभी इसके नीचे अगर आ रहा है तो प्रीवियस हाई है देन वी हैव टू बी केयरफुल अभी अभी कब कैसे क्या होगा आई डोंट जनरली व्हाट आई सी नो व्हेनेवर इट इज कमिंग डाउन बिलो ऑल टाइम हाई देन इट मे टेक सम टाइम टू अगेन कम बैक और यहाँ पे क्या है ना ऐसा नहीं कि जस्ट ब्रेक किया इट इज जस्ट 1.5 ईयर का टाइम फ्रेम है वैसा सो ऑलवेज ब्रेकिंग ऑल टाइम हाई कमिंग बैक देयर इज अ गुड एंट्री पॉइंट बट ये अभी उसको भी ब्रेक कर दिया अभी बोल नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा एक्चुअली वापस ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना कि द मेन जियो जो था
और रिटेल स्लो हो गया, और जियो जो था वो ऑलरेडी अभी इसको थ्रेट लग रहा है लोगों को कि भाई कंपटीशन आ सकता है जबरदस्त टेस्ला से। BSNL एंड स्टारलिंक दोनों। हाँ वैसा बीएसएनएल का तो नहीं पता कि उन लोग उतने कॉम्पिटिटिव रहेंगे कि नहीं, बट स्टारलिंक तो टेस्ला तो जानती है अभी से, वो तो बहुत एग्रेसिव रहता है ना जो भी कर, तो वो बोल नहीं सकते। तो दैट इज आई फील दैट इज पीपल आर टेकिंग लॉन्ग टर्म बेट एक्चुअली, ये ऐसा हो सकता है, बट आई मे बी रॉन्ग। Yeah, but Starlink is also not that cheap. Like I was just checking the US and UK prices. So I mean, again, if it is supposed to provide rural internet connectivity, तो मुझे नहीं लगता इंडिया में कौन 5,000 रुपये उनको महीने का देगा। अब वही है ना कि अब क्या स्पीड दे रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, कितने महीने का दे रहा है, वो तो जब आएगा, अब वो भी जब अब मतलब पोजीशन करेगा अपने आप को, तो कुछ सोच समझ के ही पोजीशन करेगा ना कंट्री वाइज। लेकिन अब अभी तक जैसे अब BYD कम कर रहा था, तो अगेन ही रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द कार। और वही बोल रहे हैं कि वंस ही नाउ ही इज इन द गवर्नमेंट, ही इज प्लानिंग टू स्क्रैप दैट $7,500 जो मिल रहा है उन लोग को वहां पे, क्या बोलते हैं, इंसेंटिव जो ये सब। सब्सिडी इंसेंटिव मिल रहा है, वो ही वांट्स टू रिमूव दैट आल्सो। अभी क्या होगा, जैसे ही वो रिमूव करेगा तो अदर कार कंपनीज जो होंगे वो कॉस्टली हो जाएंगे, ही विल हम्म। बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, और ये मास में कर रहा है तो ये थोड़ा सा प्राइस गिराएगा तो बाकी लोग आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। तो वो गेम चल रहा है अभी वहां पे, समझ रहा हो? तो डायनेमिक्स कैसे चेंज होंगे अपन बोल नहीं सकते, बट डेफिनेटली ही विल हैव सम प्लान, देन ओनली ही इज प्लानिंग टू कम। अगर वो उसको मालूम है कि ये प्राइसिंग ऐसा है तो क्यों आने का वो करेगा, करेक्ट, दैट ही वुड हैव डेफिनेटली थॉट समथिंग ऐसा है। और कॉस्टिंग कैसे होता है मेरे को नहीं पता, कि मीन्स वंस यू हैव these orbits, means all these small orbits all around the earth, तो उसका कुछ कॉस्टिंग एक बार छोड़ दिए तो कुछ रेगुलर कॉस्टिंग है क्या है पता नहीं। अब जैसे वो यूक्रेन में भेजा है वहां पे दे रहा है, क्या किया कैसे किया वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इन डेप्थ, बट डेफिनेटली दे वुड हैव थॉट समथिंग वैसे। करेक्ट। है ना, तो ये क्या हो रहा है ना कि अब क्या हो रहा है, मोर देन टेकिंग नाउ फंडामेंटल कॉल, इट इज मोर ऑन अ फ्यूचर कॉल, मेरे को ऐसा लगता है ऐसा। और एकदम प्योरली देखना चार्ट में, तो जब तक ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है, ये हो सकता है कि यहाँ पे वापस आए और इसको टच करके जाए 1463 के आसपास। जनरली व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ गैप with such high volume, unless this is broken for me, and this gap and 1600 is not very far, another 10%, correct? So I will always, sometimes what happens, it closes this और फंसा देता है, तो unless it makes all time high I will never enter fresh position in the line, हम्म। ये चीज। क्योंकि यहाँ पे भी एक गैप है, देखो यहाँ पे भी एक गैप है, राइट, ये बट वाला। लाइक दोज हु ऑलरेडी हैव पोजीशंस देखो एंड ना, ये आपको सामने दिख रहा है ना, देखो ना ये गैप कितना परफेक्ट है, देखो यहाँ टच किया नीचे आया, फिर टच करने की कोशिश किया नीचे आया, समझ रहे हो ना, पैसा टू पैसा यू कैन मार्क वैसा मुक। राइट, मतलब चार्ट में तो वीकनेस है तो लाइक। एकदम क्लियर है, गैप्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट है गैप। मतलब आपके सामने ड्रॉ किया ना, मैं अभी मैं तो पहले से फॉलो नहीं कर रहा था इतना, अभी आपके सामने वो गैप बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड इफ इट इज क्लोज टू ऑल टाइम हाई, वेट फॉर ऑल टाइम हाई क्लोज, नॉट ओनली द क्लोज ऑफ दिस गैप वैसा। क्योंकि रिस्क तो रिवार्ड बहुत बड़ा है ना, यहाँ पे टच करके वापस यहाँ गया तो क्या करो वैसा। नीरज जी, आई नो इट्स गेटिंग क्वाइट लेट, लेकिन जैसे इसको रियलटेल के साथ में सिमिलरली कंपेयर किया जाए चार्ट वाइज सिर्फ ओनली, नॉट फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, यस यस, तो देन आई मीन। ये तो साइडवेज है, साइडवेज मूवमेंट। हाँ तो यहाँ पे मतलब ये तो छोटे से गैप है, साइडवेज मूवमेंट। नहीं तो तो यहाँ पे भी जैसे आपने 550 500 520 के आसपास या कभी तो आप एग्जिट सेल आउट किया था, सो हाँ, बिकॉज लाइक फ्रेश एंट्री अदर। में करूंगी इंडियन नेक्स्ट में, क्योंकि अब तो मेरे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आई डोंट वांट 15-20% मेरे को इसमें एंटर ही नहीं करना है ऊपर लेवल। मेरे को दूसरी जगह और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई वांट टू सी मोर, आई वांट टू सी ग्रोथ, आई वांट टू सी दैट गेनिंग मार्केट शेयर एंड ऑल, करेक्ट वैसा। अग्रीड। तो अब मैं तो, हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि रिलायंस का चार्ट तो इससे ज्यादा बुरा लग रहा है अभी देखने पे। हाँ रिलायंस का तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, दो दो गैप दिख रहे हैं ना, जब तक वो क्लोज नहीं हो तो देखने की जरूरत ही नहीं, दिमाग नहीं लगाने की तो जरूरत ही लेकिन नहीं। जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हो तो उनका क्या करना चाहिए, उनको तो एग्जिट करके हाँ, कहीं और पैसा लॉट हाँ करना तो चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन में वही है कि अभी अगर अगर मेरे पास अगर है, अगर तो सिंपल है कि
तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना कि जैसे अभी ये 1450 1400 है ना, तो थोड़ा सा निकाल दो आधा। अगर बहुत हैवी पोजीशन है तो आधा निकाल दो। ये जो प्रीवियस जो ब्रेक डाउन हुआ है, प्रीवियस जो सपोर्ट था 4 जून के पहले वाला है ना, यहाँ 1400 के आसपास आएगा तो निकल जाओ थोड़ा सा खाली। हम्म। But there is क्योंकि a फिर potential, right, for Reliance in the future, especially on a lot of the industries that they are coming into. yes, definitely. But again, that's what kind of stocks you are getting at. How you want to position yourself. You want to position something post demerger, so wait for another 2 years if you want to play out the demerger. If you don't want to play out, because see, retail will get retail multiple. Now they are not getting that multiple. What happened in Raymond? Raymond Lifestyle got retail multiple, correct? So what is that we are expecting? So if we are getting so many other stocks are there, and you have something on your radar better than Reliance with better growth, then why to buy Reliance? As simple. Retail and also Geo, right? Once they have this LLM model, AI, everything done, I think there may be a. So Geo again, like again, if Starlink comes, then what they will do, we don't know. Because Bharti is silent. Bharti Airtel is, see, Bharti Airtel is doing very good actually. So now Bharti will also not sit quite. They're also doing very good. Okay. So but Bharti has also broken previous high, right? नहीं कहाँ, ये देखो ना, नहीं ब्रेक किया ना। नहीं आप प्रीवियस हाई ये सितंबर वाला नहीं लोगे आप, अगस्त एंड सितंबर वाला। नहीं, ये जो कंसोलिडेशन देखो ना, ये आया ऊपर आया, ये दिस वाज द हाई डाउन। अब जो बेस फॉर्मेशन कहाँ था, ये बेस फॉर्मेशन है। अग्रेड, लेकिन यदि इस लेवल से गिर गया सपोर्ट किसी भी रीजन से तो देन फंडामेंटल अभी इसके इश्यूज। अभी बिलो 1400 तो वेट। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि अभी इतना ज्यादा, मतलब इमेजिन दैट समथिंग विच इज 14 times of Reliance, and if I do divide by 8, ठीक है, 2 years back 30 lakh, which was double of Reliance, correct, 2 years back, has become eightfold. तो ऐसा नहीं कि रिलायंस 8 गुना नहीं हो सकता, डिपेंडेंट प्रोवाइडेड दे हैव दैट काइंड ऑफ, दे शो दैट काइंड ऑफ ग्रोथ। सो 2 years back, which was 2 times of Reliance इंडियन रुपी में, हैज बिकम 8x। तो आप सोचो कि अभी क्या हो रहा है कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ आ गया। टेस्ला 1 ट्रिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 4 5 times ऑफ। तो और इतने सारे बिजनेस टेस्ला के अंदर, तो इतने सारे बिजनेस, और एक एक दे टेलिंग दे विल गो मास ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ भी हो सकता है टेस्ला में, वैसा, करेक्ट है वैसा। तो ऐसा नहीं है कि जो इतना बड़ा कुछ नहीं हो सकता, एनीथिंग कैन हैपन प्रोवाइडेड देयर शुड बी दैट काइंड ऑफ ग्रोथ। आज मैं वही शाम को ही कर रहा था, देखो बोला 40 लाख करोड़ रिलायंस, 14 times ऑफ इंडिया का टोटल मार्केट कैप इज 5.5 ट्रिलियन। तो एनवीडिया इट सेल्फ इज ओनली 3 ट्रिलियन, मतलब 50% ऑफ इंडिया मार्केट कैप इज ओनली वन स्टॉक एनवीडिया। आप सोचो, मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ टोटल इंडिया से कैसा है। एनवीडिया 3 ट्रिलियन, करेक्ट। आप सोचो कि क्या हो गया, एंड स्टिल आई एम रेडी टू बाय मंडे टू आई एड सम। तो ये चीज है, तो मतलब ग्रोथ क्योंकि दिख रहा है वहां पे, ग्रोथ दिख रहा है। एंड मे बी दिस इज जस्ट अ बिगनिंग फॉर एनवीडिया, फॉर मतलब इतने सारे सेक्टर्स में इतना सारा इम्प्लीकेशन एंड द काइंड ऑफ एप्लीकेशन दे आर डेवलपिंग, वी नेवर नो व्हाट। And यहाँ से Neeraj, अगर, maybe मतलब we'll need one session for how to get into the US market if at all if somebody wants to. हाँ ठीक है, नेक्स्ट सेशन में ले ले, समझा दूंगा एक बार। उसमें भी है 2 3 पॉइंट है, जैसे 7 लाख से ज्यादा करोगे तो टीसीएस 20% डिडक्ट हो जाएगा, ब्रोकरेज, करेंसी फ्लक्चुएशन, एक बार ले सकते हैं, नेक्स्ट वीकेंड वही कर लेते
कोई दिक्कत। If anyone agrees, then we can take like that. You can just message in the group and please give the review for the session also, so that Sure. everyone is everyone joins next time. That just everyone is motivated to join again. करेंगे हरीश, नेक्स्ट वीकेंड मैं ले लेता हूँ, है ना, Definitely. यूएस स्टॉक्स, ठीक है ना, कैसे पैसा ट्रांसफर करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, वो भी मैं एग्जांपल सेशन में, कोई दिक्कत, है ना, बिल्कुल। फिर उसके बाद वो पेटेंट वाला और वो कर लें, कोई दिक्कत, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो, क्योंकि ना कैसे करेंसी फ्लक्चुएशन इंपैक्ट करेगा, कैसे अपने को ब्रोकरेज लग रहा है, अपन जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या सोच के ट्रांसफर करना चाहिए, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहिए, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो फॉरेन करेंसी। अच्छा, ले लेते हैं, उसी को ले लें नेक्स्ट वीक, प्लस पेटेंट ले लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। So request all of you to give reviews in the group. Okay, so everyone is motivated. थैंक्स Thank you all नीरज। of you for joining. Thank you all of you. Thank you so much for taking out valuable. Thank you. Thanks a lot, Neeraj. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.